In this video, we will discuss common issues occur while designing entity relationship model. ईआर मॉडल में रिलेशनशिप सेट्स या फिर एंटिटी सेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे डिफाइन करना है, इसका कोई एग्जैक्ट गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है। एज अ रिजल्ट जो भी ईआर मॉडल डिजाइन कर रहा है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बाय यूजिंग देयर ओन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वो अपने हिसाब से ही एंटिटीज रिलेशनशिप्स डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट there are common mistakes which are getting repeated while working upon this. इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ बेसिक डिजाइन इश्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे कि कहाँ पे एंटिटी यूज करना है या फिर कहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, हाउ डू वी यूज एंटिटी सेट्स एंड रिलेशनशिप सेट्स, कैन वी यूज एनरी रिलेशनशिप या फिर तो कैन वी सिंप्लीफाई इट बाय यूजिंग बाइनरी रिलेशनशिप्स, how do we place the relationship attributes. These are our four major focus points. हमें एंटिटी सेट यूज करना है या फिर एट्रीब्यूट, ये मेजरली डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज। आप जिस यूज केस के लिए डेटाबेस बना रहे हो उसके साथ कुछ रूल्स एसोसिएटेड है क्या, उसके क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके हिसाब से वी विल हैव टू डिटरमाइन कि इसमें हम लोग एट्रीब्यूट यूज करें या फिर तो हम एंटिटी यूज करें। बहुत बार एक कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है कि यूजर आइडेंटिफाई तो कर लेता है एंटिटी सेट्स एंड ऑल, बट दे दे मेक यूज ऑफ प्राइमरी की ऑफ वन एंटिटी सेट एज एन एट्रीब्यूट टू अनदर एंटिटी सेट। सो वो रिलेशनशिप डिफाइन करने के अलावा ये काम कर देते हैं। इंस्टेड व्हाई नॉट टू लेट रिलेशनशिप टू डू दैट, डायरेक्टली आप ऐसे ही प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स एक एंटिटी सेट का दूसरे में डालो। इससे अच्छा तो let's define the relationship and according to the relationship we will make a decision what to do with that. वैसे ही दूसरी मिस्टेक ये कर सकते हैं कि हमारे जो प्राइमरी के एट्रीब्यूट्स है बाय डिफॉल्ट हम लोग उसे रिलेशनशिप सेट्स में डालते हैं। देर आर सर्टन रूल्स फॉर दिस, आई मीन बेस्ड अपॉन द कार्डिनलिटी ऑफ योर रिलेशनशिप there are certain guidelines wherein you can determine which primary key would be used as a part of your relationship set attributes. Correct? So it is always recommended that you should always look after these two important points. Very first thing is whether you really want to use entity or attribute, and in the second case whether what would be the primary key of your relationship set or what would be the primary key of your entity sets. I'll give you a simple example to brief about my first aspect. कौन सी चीज में हम लोग एंटिटी सेट यूज करेंगे या फिर कौन सी चीज में हम लोग एट्रीब्यूट यूज करेंगे। लेट अस से आई हैव अ एंटिटी कॉल्ड एज पर्सन। नाउ दिस पर्सन is having certain contact details. Okay, so let us say this contact detail, if I say that there are multiple mobile numbers, okay, how are you going to store this? Because अगर मैं पर्सन टेबल के अंदर मोबाइल नंबर एज अ कॉलम डाल दूंगी तो इट बिकम्स कंपल्सरी फॉर एवरी पर्सन टू हैव अ मोबाइल नंबर, आई मीन इम्प्लिसिटली वो अज्यूम किया जाता है। सो someone might choose to have a separate entity set just to store this mobile number. बट इज इट रियली रिकमेंडेड? क्योंकि अगर आपने दूसरा एक एंटिटी सेट डिफाइन कर दिया तो it shouldn't happen that it is turning it out as a overhead for you for while searching information. Okay, so in case if you're just storing mobile number into for the particular person, why can't you use multi-valued attribute for that? But अगर ऐसे कोई सिनेरियो है, in addition to this mobile number you also need to store some additional things. So maybe the who is the provider for this and what is the handset information or something like that. So if you want to store some additional information about this, in such a cases if you are defining it as a separate entity set, that can be useful because it will become more generalized thing. आपका एक separate subset बन गया entity set का यहाँ पे. So again, I'll keep it to the business scenario.
According to the business scenario needs, we need to choose whether to use entity set or whether not to use attributes. However, best practice always says that if it is a single attribute but wherein you are getting multiple values for that, you can also try to think about using multi-valued attribute. In other case, if you have some additional information need to be stored along with this attribute, in such a cases you can choose to have separate entity set. ऑब्जेक्ट को एंटिटी सेट की तरह डिफाइन करना है या फिर रिलेशनशिप सेट की तरह, कुछ सिनारियों में ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है. टू अंडरस्टैंड दिस and to determine the right use, what we need to do is we need to create a relationship set so that we can identify what exactly need to be done. जैसे फॉर एग्जांपल आप इस एग्जांपल में अगर देख रहे हो तो हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है एंड दूसरा टेबल है कोर्स. स्टूडेंट टेक्स कोर्स. Okay, so there is a relationship between these particular two entities, but again I have a question. स्टूडेंट ने कौन से कोर्स को एनरोल किया ये कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? करेक्ट. कैन वी डू दिस बाय एडिंग एन एडिशनल एंटिटी सेट इनटू दिस? थिंक अबाउट दिस. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इन एडिशन टू द स्टूडेंट एंड कोर्स हम लोगों ने और एक एडिशनल एंटिटी डाल दी, रजिस्ट्रेशन. And we can define total participation along with this registration entity for the student and course tables. So क्या होगा? For sure registration table में तो student और course के registration के details तो होंगे ही. Now but obvious आपको आपके business scenario के हिसाब से देखना है. अगर किसी चीज को relationship set के हिसाब से ही represent करना है तो you have to stick to the relationship set. But you always need to check for the workarounds as well. Always check for the alternates. So it can be implemented in this way. It can also be implemented with the by defining one separate relationship set along with its attribute. एक बहुत common mistake होती है while choosing the degree of the relationship set, whether it should be a binary relationship or it should be n-ary relationship. बहुत बार हो जाता है कि बिकॉज आपका बिजनेस सिनेरियो कॉम्प्लेक्स होता है, यू फाइंड दैट बहुत सारी एंटिटीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है. ओके, बट व्हाइल थिंकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी अबाउट द बिजनेस सिनेरियो, बहुत बार हम लोग छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है. लेट्स से वी हैव अ एंटिटी कॉल्ड एज, like we have a relationship called as parent which might relate to an entity child. Okay, now there could be relationship as father and mother. So it sounds like that you have three entities here, like one is father, another is mother, and then you have another entity called as child, and all these three entities are sharing the ternary relationship. Can it be implemented with the help of binary relationship? Can we think about this workaround? Say for example, you can have a child entity which is having a separate relationship set with the mother and father entity. Now इसमें से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकते हैं अगर आपके पास बाय एनी चांस कोई एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है. In the ternary relationship, it becomes difficult to find such a information. Say, let us say you do not know what is the ID of one of the parent. सो आपको वो दूसरे पेरेंट की भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती टर्नरी में. बट अगर यही चीज मैं बाइनरी में सॉल्व करूं, हाँ, अगर मेरे पास कोई भी एक पेरेंट का आईडी मिसिंग है बट इफ आई हैव अदर पेरेंट्स आईडी, आई कैन एटलीस्ट फाइंड आउट दैट इंफॉर्मेशन. सो इट माइट हैपन और इट इज क्वाइट पॉसिबल to have a non-binary relationships which can also be still implemented with a binary relationship. That's the simplest form of implementation. Defining cardinality is one of the complex and tedious tasks. If we do not define cardinality of the relationship properly,
we would often make mistake while determining the key attributes or the relationship attributes for the particular relationship set. So जैसे हमारे पास हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि based upon the cardinality we can determine what should be the attribute for the relationship. How can we find out the related information? In simple words, that is a motive, correct? अगर आप लोगों ने कार्डिनलिटी ही ठीक से अगर पहचानी नहीं है तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड इंफॉर्मेशन. सो it's an always an important task to determine cardinality properly. You should not just check cardinality with one-sided relations, but you should need to check it into the bi-direction way. अगर student और teacher entity are having relationship with each other, in such a cases आपको वाइस वर्सा भी देखना है कि एक इंस्ट्रक्टर है और एक टीचर है जो मल्टीपल स्टूडेंट्स को सिखाता है. वाइस वर्सा क्या है? इज इट समथिंग वन स्टूडेंट इज गेटिंग taught by multiple teachers, or is it that one student is getting taught by only one teacher? So this will help you to refine your cardinalities, and definitely it will be one of the major step while removing the ambiguity from your schema. So friends, while concluding, I would like to say that it requires the overall knowledge of each part that is involved in designing and modeling an ER diagram. The basic requirement is to analyze real world scenario and connectivity of your entities and its attribute to each other. अगर आप ये चीज ढंग से कर लो तो most of your design would come out perfect.